Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed law of multiple proportions in chapter atoms and molecules. Okay, now discuss according to Dalton. Right? Let's start with the animation. According to this law, when two elements combine to form two or more different compounds, then the weight of one of the elements is constant and the other has a simple ratio. Basing on Proust's observations, John Dalton further researched and realized that water could exist as a gas that is mixed with air and occupies the same space as air. Solids cannot occupy the same space as gas. For example, ice cannot mix with air. This made Dalton ponder over what could allow water to sometimes behave as a solid and as a gas at other times. After a series of experiments with various substances in different states, Dalton concluded that all matter must be composed of tiny particles which cannot be further divided. Suppose, according to Dalton, आपके पास कोई एक ऐसा मेटेलिक बार है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप तोड़ रहे हैं, 1 से 2 में, फिर तोड़ा उसको, फिर और तोड़ा, इतना तोड़ दिया कि सबसे बाद में कुछ पार्टिकल्स बने जिनको आप लास्ट में एटम्स बोला, इनको क्या बोला? एटम्स, जो कि डिफाइन करता है दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको बाद में और तोड़ा ना जा सके. राइट? These are called the smallest particles. Small units are called atoms. Okay, तो देखो जरा पॉइंट क्या है. जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा वही तुम्हारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुए पूरी तरह से. He called them atoms. So an atom can be defined as the smallest particle of an element. According to Dalton, all matter is made of atoms. Atoms are indivisible and indestructible. Interesting point. All atoms of a given element are identical in mass and in properties. Compounds are formed by a combination of two or more different kinds of atoms. And a chemical reaction is a rearrangement of atoms. Having identified some elements, Dalton proposed a scheme of notation to represent elements. For example, hydrogen was represented as, carbon as, oxygen as, nitrogen as, sulfur as, phosphorus as, copper as, silver as, gold as, iron as, chlorine as, tin as, zinc as, and lead as. L. The symbols used today were suggested by Berzelius. The first letter of the symbol is always in uppercase. Some elements were represented by the starting alphabet of its name. For instance, carbon is represented as C, boron as B, oxygen as O, sulfur as S, nitrogen is written as N, and hydrogen as H. All the elements do not follow the same convention. Symbols of some elements were the first two alphabets, where the second alphabet is in the lower case. For example, aluminium is represented as Al, chlorine as Cl, argon is written as Ar, beryllium as Be, and lithium as Li. An element is represented by either the first or the first and any other letter of its Latin name.
Latin There names. are some exceptions while writing the symbols for some of the elements. These names were derived from Latin. So some of the elements are being derived the name as they are called, right? But some are being derived from their Latin name, just like antimony. Symbol is SB, but its Latin name is TBM, but we call it antimony, right? We call it antimony, but its Latin name is TBM. Symbol is this, but we call it antimony, right? So these are some that had to be learned. The first letter and the second letter of their Latin names are used to represent the symbols of these elements. Cuprum, aurum, iron, For ferrum. example, antimony is called stibium in Latin, and the symbol is SB. Copper is known as cuprum, and the symbol is Cu. Gold as ornament, represented by Au. Iron as ferrum, and the symbol is Fe. Lead as plumbum, and is represented by Pb. Mercury as hydragium, and is represented as Hg. हाइड्रोजिरम, राइट, Hg, जिसको आप मरकरी बोलते हैं, वो हाइड्रोजिरम हुए. इस तरह पोटेशियम, कैलियम, सिल्वर, अर्जेंटम, राइट. Latin name. Kalium is the Latin name of potassium, and its symbol is K. Silver as argentum, and it is represented as Ag. Natrium is the Latin name of sodium, and is represented as Na. The Latin name of tin is stannum, and the symbol is Sn. Wolfram is the Latin name of tungsten, and it is represented as W. टंगस्टन. टंगस्टन बहुत ही अच्छा मेटल कहा जाता है, और इतना फाइन मेटल है जिसको आपने देखा होगा बल्ब में, जो कि पहले बल्ब आते थे. बल्ब पहले कैसे दिखते थे, आपने देखा होंगे बल्ब जो कि येलो कलर की लाइट होती थी, जिनमें बल्ब में एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, राइट. वो फिलामेंट कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा बल्ब्स को. तो ये जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन, इसकी खास बात होती है, स्पेशलिटी ये है, ये टंगस्टन में आप कितना भी हीट कर दें, ये जल्दी से फ्यूज़ नहीं होता, ख़राब नहीं होता. दैट मीन्स ये हाईली कंडक्टिंग है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेटल है, कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें, करंट फ्लो होता है, और ये रेजिस्ट करता है हीट को. तो एक तरह से कह लो ये हीट रेजिस्टिंग हुआ है ना. तो हीट रेजिस्टिंग हुआ, और एक खास चीज़, ये जल्दी एयर से भी रिएक्ट नहीं करता. तो रेजिस्टेंस है हीट की, जल्दी इसमें हीट नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती. हाँ, ग्लो करेगा, सब कुछ करेगा, बट हीट रेजिस्ट कर लेता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया बल्ब्स में. A symbol not only represents one atom, but also the mass of the element. According to Dalton, each element has a characteristic atomic mass. Scientists initially took the mass of oxygen as standard mass, since oxygen formed a large number of compounds. In 1961, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. कार्बन 12, इसको लिया गया कोई भी एटम का मास निकालने के लिए. किसी भी एटम का मास आपको पता होना चाहिए ना. याद रखेंगे, मास इज डिफरेंट, वेट इज डिफरेंट. मास हर चीज़ का कॉमन होता है. याद रखेंगे, मास, जैसे मान लो हमारी बॉडी का मास है 70 किलोग्राम, तो दूसरे प्लैनेट में ऑफकोर्स मास वही रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा. तो जब भी हम वेट की बात करते हैं, वेट रिलेट करता है ग्रेविटी को, राइट. वेट रिलेट्स ग्रेविटी. बट जब मास की बात करेंगे तो मास हमारा अमाउंट है, जो बॉडी वेट है, राइट. तो मास कहीं भी हमारी बॉडी का चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज हो सकता है अलग अलग प्लैनेट्स में. तो जो मास होता है, हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का मास कहीं से तो कंपेयर करोगे ना,
तो कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड मास लिया गया जिसको बोला गया कार्बन, और जो 12 साइन दिया गया था वो कार्बन इसका एटॉमिक मास है, राइट। तो याद रखेंगे एटॉमिक मास हुआ ये, जो सिंबल ऐसे जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, पूरा प्रेजेंटेशन कार्बन का क्या होगा 6C12। दिस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। और ये क्या दिखाता है आपको, ये वो दिखाता है मास। दिस इज द मास। तो स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12। For example, in a bakery, if a cake is cut into 12 equal pieces, he is able to find the mass of each confectionery item relative to the mass of a single piece of cake. Now, he sells the confectionery by relative confectionery mass unit. Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one C12 atom. करेक्ट। Matter is made of atom. तो मास को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, मास को हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के एक पार्ट से। क्लियर, यानी कार्बन के कितने टुकड़े किए गए 12, और उसके पार्ट से कंपेयर करेंगे।